चलो ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। लगता है लास्ट टाइम हमने कुछ एमसीक्यूज जो किए थे, तो 21st वाला हो गया था शायद, चेक करो एक बार। Okay, let us move further. Yes, try this. Question number 20. Have you done this? Yeah, I think we have done it. Even 21st also we have done already. In the resultant of two of the which of the following sets of forces cannot be zero? Yeah, ये भी हमने किया था, correct है? Okay, so let us see this 22nd here. ठीक है, question number 22nd. Check करो एक बार. A proton in a cyclotron changes its velocity from 30 kilometer per second north to 40 kilometer per second east in 20 seconds. What is the average acceleration during this time? Okay, तो देखो ठीक से यहाँ पे, what is the average acceleration? You have to find it out. So let us see what should be the average acceleration of the proton during this time. Okay, so देखो ठीक से यहाँ पे कि एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हमको पता है ऑलरेडी कि एवरेज एक्सेलरेशन a bar is actually v bar minus u bar upon t, करेक्ट है, ये फॉर्मूला है.
और यहाँ पे दिया हुआ है कि द प्रोटॉन इन अ साइक्लोट्रॉन चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 30 किलोमीटर पर सेकेंड नॉर्थ. So can you show this initial velocity on the graph paper? See here, this is suppose y-axis and this is x-axis. Then we can show the velocity 30 kilometer towards north to be like this. So this is going to be the velocity, which is the initial velocity here, which can we call it as a 30. Its magnitude is 30 and it is directed due north. So we can express it as 30 j bar. Okay, 30 j bar. Okay. Then to 40 किलोमीटर पर सेकेंड ईस्ट. ठीक है, तो अभी ईस्ट किस तरफ रहता है हमको पता ऑलरेडी. दिस इज डायरेक्शन ईस्ट. ओके, विच इज गोइंग टू बी एक्चुअली 40. Yes, so basically this is 40 and this should be accompanied by I bar. Actually, why? Because it is in the direction of x-axis, that's why. Okay, and this is going to be actually v bar here, and this is no, sorry, this is u bar actually. इनिशियल वेलोसिटी मतलब ये उसको क्या बोलते हैं, u बार बोलते हैं, एंड फाइनल वेलोसिटी को बोलते हैं v बार. ओके, तो ये u बार है और ये v बार है, और हमको अभी यहाँ पे इनका एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है. तो एवरेज एक्सेलरेशन का जैसे कि हमको फॉर्मूला पता है ऑलरेडी, v बार माइनस u बार अपॉन t. तो v बार कितना है यहाँ पे, ये देखो 40 i बार माइनस ये 30 j बार, तो ये बन गया 30 j बार, and that is to be divided by the time, which is given to be 20 seconds here. So here it is to be replaced here 20 seconds, right? And then we can just simplify this further so as to get it as, अच्छा इसमें से 10 कॉमन निकाल सकते हैं. तो ये देखो, ये 10 अगर कॉमन निकाल लिया तो अंदर में बचेगा 4i बार minus 3j bar, and that is to be divided by 20 here, so that we can just cancel out this 0 from numerator and denominator, so as to get this a bar to be simply equal to 1 by 2 into bracket में 4i bar minus 3j bar. Okay, so this is going to be the acceleration. Okay, no doubt. So this is the acceleration actually. तो अभी इसमें देखो, ये acceleration जो है वो कौन सी डायरेक्शन में है, तो वो कैसे हम ढूंढ के निकालेंगे. यस, तो उसके लिए देखो, ये जो वेलोसिटी v बार है और ये u बार है, तो v बार में से जब हम u बार माइनस करेंगे तो इसका मतलब हमको जरूर इस u बार का नेगेटिव करना पड़ेगा. तो u बार का नेगेटिव बनेगा इस तरफ, नीचे की तरफ, और ये अगर इसको हम इस माइनस u बार को इस v बार के अंदर ऐड करना, माना ही u बार को v बार में से सब्ट्रैक्ट करने के बराबर है, और इसलिए इन दोनों का जो डिफरेंस है, मतलब ये इन दोनों का v बार का और इस माइनस u बार का जो वेक्टर सम है, तो वो एक्चुअली डायगोनल के अलावा, मतलब इस तरह इस डायरेक्शन में वो जाएगा जरूर, और उसका जो डायरेक्शन है वो कितना एंगल करेगा, तो देख सकते हैं आराम से. ये जो है, दिस इज गोइंग टू बी एक्चुअली 30 एंड दिस इज ऑलरेडी 40. तो अभी ये तुमको पता होना चाहिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है ना, पाइथागोरस थ्योरम जिसको हम यूज करते हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एक साइड होता है 3, दूसरा साइड होता है 4 और तीसरा होता है 5. तो तुमको पता है ऑलरेडी 3, 4 and 5. This is a Pythagoras triplet, and it is a important result, ठीक है ना, in the physics, that if you have a triangle, right angle triangle with the sides that is 3, 4, 5, then the angle opposite to this 3 side of magnitude 3 happens to be actually 37 degree. Remember, this angle is actually 37 degree, and the angle opposite to this 4 side is actually 53 degree. Remember, ये दो नंबर्स अच्छी तरह से याद रख लो, 53 and 37. तो अगर ये हम लर्न करके रखते हैं ऑलरेडी, ऑब्वियसली 5 के सामने वाला जो एंगल है वो तो राइट एंगल होने वाला है, तो उसका मेजर तो 90 डिग्री है, नो डाउट. बट बाकी जो दो साइड्स बचते हैं 3 और 4,
तो ये 3 4 5 ऐसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है, तो ऐसे साइड्स रहने वाले ट्रायंगल के अंदर जो 3 के सामने वाला जो साइड है वो 37 डिग्री का होता है, 37 डिग्री का एंगल होता है, और 4 साइड के सामने वाला एंगल 53 डिग्री का होता है। तो ये बात अगर हम यूज करेंगे तो देखो यहाँ पे 30 डिग्री जो है, ये 30 डिग्री एंगल है यहाँ पे, तो सॉरी 30 मैग्नीट्यूड वाला साइड है यहाँ पे, उसके सामने वाला जो एंगल रहेगा, ये वाला एंगल, so this angle will actually be equal to 37 degree and this angle will actually be equal to 53 degree, correct है? And because of that we can say that this is the direction of this average acceleration is actually 37 degree, this is south, right, and this is east, so we can say south of east, 37 degree south of east, ये उसका आंसर रहेगा। There may be some correction in the question. Actually, it should be 37 degree south of east, and this 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड जो है वो तो बराबर है, क्योंकि मॉड ऑफ ए बार कैन बी इजीली फाउंड आउट। हेलो, okay, so this half will be kept outside as it is, and here 4 and 3 coefficients of I bar and J bar as well, so we have to take them in the square root, and 4 का स्क्वायर बनता है 16 प्लस 3 का स्क्वायर बनता है 9, जिसको सॉल्व करके हमको मिलता है 1/2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ 25, which is going to be actually 5, that is going to be 2.5 here in this way. So we can see clearly that the answer will be, the acceleration will be 2.5 kilometer per second square, but its direction will be 37 degree south of east. हेलो, को होस्ट केले, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, मी दुसऱ्यालाच को होस्ट केलं चुकून। Okay, sorry for the disturbance. Yeah, it's okay. Yes, the answer will be simply from
south of 37 degree south of east. Okay, so just make it a correction. ये जो ए ऑप्शन है उसके अंदर करेक्शन कर लो, तो इट विल बी 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, नॉट ईस्ट ऑफ साउथ. ओके, चलो नेक्स्ट वाला. A body of mass √3 kilogram is suspended by a string from a rigid support. The body is pulled horizontally by the force F until the string makes an angle of 30 degree with the vertical. Then the value of F and the tension in the string are. Okay, तो देखो यहाँ पे लिख से, let us try to draw the diagram. See, a body of mass √3 kilogram is suspended by a string from the rigid support. Okay, तो देखो यहाँ पे ये सपोज एक रिजिड सपोर्ट है और ये स्ट्रिंग है, और इस स्ट्रिंग के साथ ये एक बॉडी √3 किलोग्राम मास वाला लटका हुआ है. ठीक है, ठीक है. अभी इसमें देखो, इसके बाद हमने क्या किया, द बॉडी इज पुल्ड हॉरिजॉन्टली बाय द फोर्स F. ओके, तो इस बॉडी के ऊपर हमने एक फोर्स अप्लाई किया F इतना, जिसकी वजह से ये बॉडी इस तरफ पुल हो गया until the string makes an angle of 30 degree with the vertical. That means ये फोर्स अप्लाई करने के बाद उसके बाद का जो सिचुएशन है वो ऐसा है जिसमें ये वर्टिकल सपोज है, लेकिन वर्टिकल में अभी कुछ नहीं है. ठीक है, but the string is going to be making an angle of 30 degree with the vertical under the action of this force F here. ठीक है, तो इस F इतने फोर्स की वजह से ये बॉडी इतना 30 डिग्री एंगल करने वाला है इस वर्टिकल के साथ, राइट. ओके, और yes, the value of F and the tension in the string are. Okay, तो देखो यहाँ पे अभी ये टेंशन स्ट्रिंग के अंदर कितना होगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग मतलब that is also one type of force only which will be acting along the string in this direction here. तो इस डायरेक्शन में ये स्ट्रिंग का फोर्स काम कर रहा होगा, टेंशन काम कर रहा होगा, नो डाउट. उसको हम T से डिनोट करेंगे. ठीक है, और एट द सेम टाइम द weight of the body is already acting in a downward direction as that is mg here. तो ये mg वेट है यहाँ पे, और F इतना फोर्स इस तरफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में काम कर रहा है, और ये उसकी वजह से यहाँ पे टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है स्ट्रिंग के अंदर, जिसको हमने T नाम दे दिया है. अब देखो ऑलरेडी अगर हमने x एक्सिस y एक्सिस अगर यहाँ पे इंस्टॉल किया, तो F is already along the x axis, we can find that, and mg is already along the negative direction of y axis, correct है. So we can find this here, and if we just resolve this tension T in the two components, तो इस टेंशन T को अगर हमने दो कंपोनेंट्स में अगर रिजॉल्व किया, जिसमें से एक कंपोनेंट आएगा ऊपर की तरफ और दूसरा कंपोनेंट रहेगा इस तरफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो ये दो कंपोनेंट्स को हम यहाँ पे नाम दे सकते हैं, क्योंकि जबकि यहाँ पे एंगल थीटा 30 है, तो ये एंगल भी जरूर 30 बन जाएगा. ये समझ सकते हो आराम से. देखो ठीक से, ये एंगल भी हमारा 30 बन गया. अब जबकि ये एंगल 30 है, तो इस टेंशन T को जब हम रिजॉल्व करेंगे तो उसका एक कंपोनेंट बनेगा वर्टिकल, तो ये हो गया हमारा वर्टिकल कंपोनेंट T का. ये देखो, ये तो मैं उसको अलग कलर से एक्सप्रेस करता हूँ, येलो कलर के से हम एक्सप्रेस करेंगे उसको. दिस इज गोइंग टू बी द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दिस T, which can be supposed to be T cos 30, correct है. And at the same time the horizontal component here is going to be actually here, it is denoted by T sin 30, correct है. तो ये T sin 30 बन गया. ठीक है, अभी हमको क्या करना है, just you have to equate these components since the body is in equilibrium. ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इसके कारण हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि वर्टिकल इक्विलिब्रियम का कंडीशन अगर अप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा. देखो ठीक से, वर्टिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि वर्टिकल फोर्सेस आर इक्वल. तो मतलब ये जो वर्टिकल फोर्स है यहाँ पे T cos थीटा और ये mg जो है वो दोनों इक्वेट करने होंगे हमको. तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा बन जाएगा T cos थीटा इज मतलब T cos 30 इज इक्वल टू mg, और दूसरा इक्वेशन हमारा बनेगा F इज इक्वल टू T sin 30. ठीक है, जिससे हमको मिलता है T sin 30 इज इक्वल टू F. ठीक है, अभी ये दो इक्वेशन सॉल्व करके ही हमको जो भी मिलने वाला है, तो देखो हमको क्या पूछा है,
वैल्यू ऑफ f सबसे पहले हमको ढूंढ के निकालना है. हाउ कैन फाइंड आउट दिस f हियर. ओके, सबसे पहले क्या करो, ये mg हमको दिया हुआ है, m दिया हुआ है कि नहीं, √3 करके. तो ऐसा करेंगे कि यहाँ पे एलिमिनेट t को एलिमिनेट करने के लिए जस्ट डिवाइड करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को. ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 and suppose this equation number 2. Let us divide this equation number 1 and 2. So divide अगर करेंगे ऐसा, डिवाइड भी 2 by 1 ऐसा कर दो. ठीक है, 2 को 1 से डिवाइड कर दो तो क्या होगा देखो यहाँ पे. तो ऊपर में बचेगा t sin 30 upon t cos 30 which is going to be actually equal to f upon mg. करेक्ट है. So that we can just simplify this further and get this as t sin 30 upon t cos 30, जिसमें t cancel हो जाएगा और हमको मिलेगा tan 30. okay, tan 30 which is going to be actually equal to f upon mg where m is nothing but √3. तो यहाँ पे आएगा √3 और g का जो वैल्यू होता है वो हमको पता है ऑलरेडी 9.8 हुआ करता है. तो इसलिए यहाँ पे हम 9.8 डाल देंगे उसको और उसके बाद हमको ये मिलेगा tan 30 का वैल्यू. अभी tan 30 का वैल्यू तुमको पता है ऑलरेडी 1/√3 होता है, राइट. सो इफ यू रिप्लेस इट बाय दैट देन वी गेट दिस 1/√3 इज इक्वल टू f upon √3 into 9.8. yes, and then we can be able to cancel this √3 and just be left with f is equal to 9.8 Newton. That means the force, horizontal force which is pulling this body here is going to be actually 9.8 न्यूटन. ओके, तो 9.8 न्यूटन का फोर्स इस बॉडी को खींच रहा है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. चलो ठीक है, अगर ये हमको फोर्स मिल गया तो उसके बाद फिर हमको क्या करना है, टेंशन भी तो निकालना है. हाउ वी कैन फाइंड आउट दिस टेंशन हियर. जस्ट यूज दिस फॉर्मूला, सेकंड कैनेमेटिकल इक्वेशन. ये जो सेकंड वाला इक्वेशन है ये वाला यूज करो यहाँ पे, क्योंकि f तो हमको पता चल गया अभी ऑलरेडी. तो इसको यूज करके और t sin थीटा इक्वल टू f, ये बात यूज करके हमको आराम से f का वैल्यू, सॉरी t का वैल्यू मिल जाएगा. क्योंकि देखो t इंटू साइन 30 is actually going to be equal to f. So if you put the value of f here as 9.8 and we know that value of sin 30 is going to be half, right. So we can say this will be t into half is going to be f, that is 9.8. so that t actually becomes equal to 9.8 into 2, which becomes 19.6 Newton here. So in this way, we have got the value of t also, which is already there in this option C here. Why? Because the force is the first thing that is to be found out and tension is the second thing that is to be found out. So force is going to be 9.8 Newton and the tension is going to be 19.6 Newton. That's all. This is actually going to be the final answer. Okay, let us see the next 24th question. देखो ठीक से यहाँ पे अभी question number 24. देखो, a small sphere is hung by a string fixed to the wall. The sphere is pushed away from the wall by a stick. Okay, the force acting on the sphere are drawn in this figure. ओके, तो ये जो स्फीयर के ऊपर जो फोर्सेस काम कर रहे हैं वो यहाँ पे हमको दिखाई दे रहे हैं ऑलरेडी. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग. ओके, so the statements are P is equal to W tan theta और T bar plus P bar plus W bar is equal to O bar. तीसरा है T square is equal to P square plus W square और चौथा है T is equal to P plus W. ओके, तो अभी देखो इसमें यहाँ पे कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से रॉन्ग है तो वो हमको ढूंढ के निकालना है. बराबर. See, if we draw the diagram carefully, yes, अगर हम ये सेम एज इट इज डायग्राम अगर ड्रॉ करेंगे यहाँ पे तो हमको पता चलेगा ये दिस इज द स्फीयर which is acted upon by the three forces. One is this T here, which is acting at an angle theta with the vertical. Okay, ये theta angle पे वो काम कर रहा है.
ठीक है. Or at the same time, the second force is P, which is acting in the horizontal direction, and the third force is going to be W here, which is acting in the downward direction. Okay. Now see here, सबसे पहली बात ये है कि T को हम रिजॉल्व कर सकते हैं दो कंपोनेंट्स में, जैसा कि अभी हमने किया था. So if we do that once again here, then we can get this T resolved into components. The first component will be like T cos theta. Okay. And the second component will be like T sin theta, which will be horizontal here. So ये T sin theta बन गया. And if we just have the equilibrium here, then we can get that T sin theta is going to be equal to P here, and this T cos theta is going to be equal to W here, right? So using these two formulae, if we just divide these two equations, equation number 1 and equation number 2, इन दोनों को अगर हम divide करेंगे simply, तो देखो ठीक से यहाँ पे, तो हमको मिलेगा T sin theta upon T cos theta, which is going to be equal to P upon W, which gives T cancel, and what we are left with is simply tan theta is equal to P upon W, which gives P is equal to W into tan theta, which is correct according to the first equation. क्योंकि first option जो दिया हुआ है हमको वो यही दिया है. The first option tells us that P must be equal to W tan theta, which is already we have obtained it here, right? चलो ठीक है. दूसरी बात कि since this body is in equilibrium, ये जो sphere है यहाँ पे वो equilibrium में है, तो equilibrium में होने का मतलब क्या है कि the sum of vector sum of all these three forces, that is T bar plus P bar plus W bar, is actually going to be O bar, that is the null vector, no doubt. तो ये करेक्ट है. ठीक है. तीसरा जो चीज है यहाँ पे T square equal to P square plus W square, ये भी हम देख सकते हैं आराम से कि it will be correct, because see here, if we just square and add these two equations, first and second, ये दोनों equations को अगर हम squaring और adding करेंगे ना, तो देखो क्या होगा. Let us square and add the two equations. तो हमको मिलेगा T square तो यहाँ पे T sin theta का whole square plus T cos theta का whole square is going to be actually equal to P square plus W square, right? And then we can just be able to say that this T square sin square theta plus T square cos square theta is going to be equal to P square plus W square, and hence we can just take this T square common from the bracket and be left with sin square theta plus cos square theta inside the bracket, which is going to become 1. Okay. And if this cos square theta plus sin square theta is replaced by 1, then we are left with T square is equal to P square plus W square. Correct है? Which is already there in this option C here. Correct है? तो ये C option जो है वो भी correct हो गया. तो फिर बचा क्या अभी? T is equal to P plus W. This is not a correct one. This D is only the incorrect option. Okay, D is the only incorrect option, which cannot be proved here, because the angle between T and P and W is not 0. So that's why we cannot say that the magnitude of sum of magnitude of this W and P will never be equal to the magnitude of T here. But in fact, in between these three, T, P and W, this relationship holds true in this case here. Okay, तो यहाँ पे ये relationship true बनता है, इसलिए D इसका correct option आएगा. ठीक है. Next one, given that P bar dot Q bar is equal to 0, then mod of P bar cross Q bar is going to be. अच्छा, तो देखो यहाँ पे ठीक से कि अगर P bar dot Q bar अगर 0 है, अभी देखो अगर P bar dot Q bar 0 है, इसका मतलब क्या होता है कि P bar must be perpendicular to Q bar, right? That means theta must be 90 degree here, because we know that P bar
dot q bar is actually mod of p bar into mod of q bar into cos of theta, correct है? And since p bar dot q bar is 0, cos theta must be equal to 0. And cos theta 0 कभी होता है जब थीटा 90 डिग्री होता है, तभी होता है. तो इसलिए यहाँ पे थीटा 90 डिग्री हमको मिलता है. Since p bar dot q bar is 0, it gives the angle between p bar and q bar as 90 degree. Okay. And then we can just be able to find out this mod of p bar cross q bar here. What is mod of p bar cross q bar? It is actually mod of p bar into mod of q bar into the sine of angle theta, barabar? But sine theta is going to be 90 degree, right? So we can say that this mod of p bar into mod of q bar into sine 90, and since sine 90 is going to be 1 and multiplying by 1 doesn't make any difference, so we can say that this will be mod of p bar into mod of q bar only, which is already there in this option A here, correct है? तो A option में हमको ये पता चल रहा है. ठीक है, तो ऑप्शन ए हमको ये पता चल रहा है. चलो 26 वाला करके देखो ठीक से. गिवन दैट आर बार इज इक्वल टू 4j बार and p bar is going to be 2i bar plus 3j bar plus k bar, right? So the angular momentum is, yes, what is angular momentum? देखो यहाँ पे ठीक से angular momentum के लिए हमारे पास फॉर्मूला है angular momentum L bar is always equal to r bar cross p bar, remember. So angular momentum निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, r bar और p bar का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा. अभी देखो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, तो उसमें r bar कितना दिया हुआ है, ये देखो r bar दिया हुआ है 4j bar. अभी 4j bar को हम कैसे लिख सकते हैं, 0i bar प्लस 4j bar प्लस 0k bar, ऐसा लिख सकते हैं. और p bar कितना दिया हुआ है, देखो लिख से यहाँ पे p bar is given to be actually 2i bar plus 3j bar plus k bar, right? And hence so L bar will be actually determinant of this I bar, J bar, K bar, and this second row will be replaced by 0, 4, 0, and the third row will actually be replaced by this 2, 3, and 1 here. Okay, which are the coefficients of I bar, J bar, and K bar in P bar. Okay, so that we can get this I bar multiplied with 4 into 1 is 4 only, minus 0 as it is, minus j bar as it is, into अभी यहाँ पे ये 0 into 1 minus 0 into 2, तो मतलब 0 in minus 0, तो 0 minus 0 becomes 0 only, and k bar into what is this here, 0 into 3 is 0 only, and 4 2s are 8 here, so we can get this as 0 minus 8, so that we can get this as I bar into 4, मतलब ये 4i bar हो गया ये, minus 0j bar, so it doesn't make any difference, and minus 8k bar directly. Okay, so 4i bar minus 8k bar, which is already there in option number A here. Check, this is going to be the correct option. Okay, so next one, given that A and B are greater than 1, then the magnitude of A bar cross B bar cannot be, अच्छा A और B मतलब mod of A bar and mod of B bar जो है वो 1 से बड़े है. ठीक है, ये दोनों का मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा है, तो अभी इसमें A बार क्रॉस B बार जो है, A बार क्रॉस B बार का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होता है, मॉड ऑफ A बार इंटू मॉड ऑफ B बार इंटू साइन थीटा होता है कि नहीं, साइन थीटा. और ये हमको पता ऑलरेडी कि साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1, इट्स नेवर ग्रेटर देन 1. Therefore this sin theta, since sin theta is less than, always less than 1, this mod of A bar cross B bar here, mod of A bar cross B bar will be less than or equal to mod of A bar into mod of B bar. Okay,
मतलब ये जो है ए बार, हाँ मतलब ए बी ओनली, ए बी से वो लेस देन इक्वल टू होगा, तो इसका मतलब वो कभी भी ए बी से बड़ा नहीं हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पे कैन नॉट बी लिखा है ना, यहाँ पे कैन नॉट बी पूछा है, तो कैन नॉट बी मोर देन ए बी, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, ए बार क्रॉस बी बार का जो मैग्नीट्यूड है वो कभी भी ए बी से बड़ा नहीं हो सकता, इट हैज टू बी स्मॉलर देन ए बी ओनली। ओके, चलो नेक्स्ट वन, 28th, vectors a bar and b bar are such that a mod of a bar plus b bar is equal to mod of a bar minus b bar. Then what is the angle between a bar and b bar? See here, this question can be solved in two ways. One is the geometrical method, another is the algebraic method. देखो, mod of a bar plus b bar is given to be equal to mod of a bar minus b bar. Okay, तो तुमको याद है मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि अगर दो वेक्टर्स ऐसे है और तो उससे जो पैराग्राम बनता है, ये सपोज इनका पैराग्राम बनता है, तो इस पैराग्राम का जो मेन डायगोनल होता है, जो उनके कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट से निकलता है, वो डायगोनल एक्चुअली इन दोनों का सम हुआ करता है। मैं बताया था ये जो डायगोनल बनता है, ये देखो सपोज ये एक वेक्टर है ए बार, उसको हम बोल सकते हैं, और ये दूसरा वेक्टर है जिसको हम बी बार बोलने वाले हैं। तो इससे जो डायगोनल बनता है या पैराग्राम बनता है, ये सपोज पैराग्राम बन गया, ठीक है। अभी इस पैराग्राम का ये जो इंटरसेक्शन से, मतलब इन दोनों के कॉमन पॉइंट से स्टार्ट होने वाला जो डायगोनल होता है ना, वो एक्चुअली ए बार प्लस बी बार हुआ करता है। दिस इज एक्चुअली ए बार प्लस बी बार, नो डाउट। और इन दोनों का जो दूसरा डायगोनल बनता है इस पैराग्राम का, ये वाला, तो ये एक्चुअली क्या होता है, बी बार माइनस ए बार है। और अगर उसका डायरेक्शन उल्टा करो, इस तरफ अगर उसको निकालो, तो वो एक्चुअली क्या बनेगा, ए बार माइनस बी बार बनेगा। ठीक है, अभी सोचो अगर ए बार प्लस बी बार का मैग्नीट्यूड और ए बार माइनस बी बार का मैग्नीट्यूड अगर सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस क्वाड्रिलेटरल के दोनों डायगोनल्स, मतलब पैराग्राम के दोनों डायगोनल्स सेम लेंथ के हैं। व्हेन इट इज पॉसिबल, अगर कोई पैराग्राम अगर रेक्टेंगल है, इनफैक्ट वो स्क्वायर अगर है, स्क्वायर, तभी ऐसा हो सकता है कि उसके जो ये वाला डायगोनल जो है और ये वाला जो डायगोनल है वो सेम मैग्नीट्यूड का है। सॉरी, स्क्वायर भी नहीं जरूरी है, रेक्टेंगल सफिशिएंट है। अगर वो रेक्टेंगल है, ये देखो ये रेक्टेंगल भी अगर है सपोज, तो भी उसका जो मेन डायगोनल है, ये सपोज मेन डायगोनल, इसका लेंथ और दूसरा डायगोनल जो बनता है उसका लेंथ सेम ही होता है। सिर्फ रेक्टेंगल ही ऐसा पैराग्राम होता है कि जिसके दोनों डायगोनल्स इक्वल लेंथ के होते हैं। मतलब अगर कोई भी पैराग्राम अगर देखते हो, तो मान लो ये पैराग्राम है सपोज, ये देखो ये समझो पैराग्राम है। अब इस पैराग्राम के दोनों डायगोनल सेम लेंथ के कभी नहीं हो सकते। जब तक वो पैराग्राम है तब तक उसके दोनों डायगोनल्स कभी सेम लेंथ के नहीं होंगे। लेकिन अगर किसी पैराग्राम के दोनों डायगोनल्स अगर सेम बनते हैं, तो इसका मतलब वो रेक्टेंगल बनने वाला है, तो इसलिए वो रेक्टेंगल होगा। और रेक्टेंगल होने का मतलब क्या है कि ए बार और बी बार के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये हमने ज्योमेट्रिकल मेथड से तो सॉल्व कर लिया। ठीक है, हमको पता तो चल गया कि द एंगल इज गोइंग टू बी 90 डिग्री, नो डाउट। बट हाउ विल यू प्रूव इट एल्जेब्रिकली? तो एल्जेब्रिकली उसको प्रूव करने के लिए इसको हम स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ। सो लेट अस स्क्वायर बोथ साइड्स। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, व्हाट वी गेट इज mod of a bar plus b bar the whole square, which is going to be equal to mod of a bar minus b bar whole square. And as we know that mod of a bar square मतलब ही क्या होता है, a bar dot a bar हुआ करता है, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट होता है कि नहीं। किसी भी वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट अगर लिया तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है। या उसको हम बोल सकते हैं कि द मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हमेशा उस वेक्टर के सेल्फ डॉट प्रोडक्ट के बराबर हुआ करता है।
तो ये बात अगर हम यूज करेंगे तो यहाँ पे ये जो मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार का होल स्क्वायर है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए बार प्लस बी बार डॉट ए बार प्लस बी बार इटसेल्फ। तो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में हमने इसको लिखा, और उस तरफ ए बार माइनस बी बार dot a bar minus b bar again. That's it. And now if we just open the bracket here, then we can get this a bar dot a bar plus a bar dot b bar here plus b bar dot a bar plus b bar dot b bar. And here it is, if we open this bracket also, then we can get these similar terms, that is a bar dot a bar minus a bar dot b bar here minus b bar dot a bar plus b bar dot b bar again, so that here from both the sides this a bar dot a bar and a bar dot a bar will get cancelled, and b bar dot b bar and b bar dot b bar will also get cancelled, and what we are left with simply here is, as we know that the dot product is commutative, we can get that is 2 times of a bar dot b bar is going to be actually equal to minus 2 times of a bar dot b bar. And hence if we take this whole thing in that side here, then we can get it as 2 times of a bar dot b bar plus 2 times of a bar dot b bar again is actually going to be 0, which means that 4 times of a bar dot b bar is going to be 0, which means that a bar dot b bar is going to be 0, which means a bar must be perpendicular to b bar. That is the result, because if the dot product of two vectors is going to be 0, then that means the two vectors must be perpendicular to each other. So इससे हमको पता चलता है कि a bar और b bar के बीच में का एंगल कितना है, 90 डिग्री, no doubt. Yes, let us see the next question. Three vectors a bar, b bar and c bar satisfy the relation a bar dot b bar equal to 0. देखो a bar dot b bar is equal to 0, और दूसरा रिलेशन क्या है दिया हुआ, देखो a bar dot c bar is going to be 0, then a bar is parallel to, तो देखो यहाँ पे a bar dot b bar 0 का मतलब क्या, a bar is perpendicular to b bar. ओके, a bar dot c bar 0 होने का मतलब क्या है, a bar must be perpendicular to c bar also. करेक्ट है, तो इसका मतलब ये a bar जो है वो b bar को भी परपेंडिकुलर है और c bar को भी परपेंडिकुलर है. मतलब अगर समझो ये b bar है और ये c bar है, तो b बार और c बार जिस प्लेन में लाई करते हैं उस प्लेन को ही a बार परपेंडिकुलर होगा कि नहीं, ऐसे ये देखो जिस प्लेन में, समझो ये इस प्लेन के अंदर ये b बार और c बार लाई करते हैं, ऐसे सपोज इस प्लेन में वो लाई करते हैं, तो इस प्लेन का जो परपेंडिकुलर रहेगा ये डायरेक्शन रहेगा a बार का, ताकि वो a बार जो है वो b बार को भी परपेंडिकुलर बन जाए और एट द सेम टाइम c बार को भी परपेंडिकुलर बन जाए ऐसे. तो अगर वो है ए बार अगर बी बार और सी बार के प्लेन को ही परपेंडिकुलर है, तो बी बार क्रॉस सी बार कैसे रहता है, बी बार क्रॉस सी बार भी इसी डायरेक्शन में रहता है. बी बार क्रॉस सी बार इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing बी बार क्रॉस सी बार, so therefore it should be parallel to a bar here. So we can say that this a bar then must be parallel to b bar cross c bar, just because a bar is perpendicular to b bar and at the same time a bar is perpendicular to c bar also. So that we can say that this a bar must be parallel to b bar cross c bar then. And 30th question जो है last question, that is a bar is equal to 3i bar minus j bar plus 7k bar and b bar is also given, then the cosine of angle made by the vector a bar plus b bar with y axis is, yes, so let us try to find out the a bar plus b bar. What is a bar plus b bar here? It's very simple. See here 3i bar plus 5i bar कितना बनता है, वो 8i bar बनता है. चेक करो एक बार ठीक से, ये बन गया हमारा 8i bar, right? Okay, minus j bar and minus j bar becomes actually minus 2j bar, right? So this is minus 2j bar, and 7k bar plus 9k bar becomes 16k bar, so plus 16k bar here. Okay, now what is the cosine of angle made by this vector with y axis? तो चलो ठीक है, y axis मतलब क्या, j bar है कि नहीं, तो उसको हम j bar ही बोल सकते हैं सिंपली. तो देखो दो वेक्टर्स के बीच में ये, इसको हम बोलेंगे सपोज c bar, ओके, और इसको हम बोल सकते हैं
या चलो इसको हम बोल देंगे डी सी बार, और इसको बोल सकते हैं डी बार। ठीक है, तो सी बार और डी बार के बीच में का हमको एंगल निकालना है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स? कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स cos थीटा इज एक्चुअली इक्वल टू a bar dot b bar अपॉन mod of a bar into mod of b bar, बराबर। तो अगर हम ये यूज करेंगे यहाँ पे, तो cos थीटा will actually be equal to a bar dot b bar, where a bar is c bar here and d bar upon mod of c bar into mod of d bar. Okay, so if we simplify this further, then we can get that c bar dot d bar. What is the dot product of these two vectors here? So देखो यहाँ पे 8 into 0 plus minus 2 into 1 plus 16 into 0 again, क्योंकि यहाँ पे 0 है ना, ये j बार को हम ऐसे लिख सकते हैं 0 i bar plus j bar plus 0 k bar, right? Hence we have got this 0 0 here. And also the mod of c bar, what is it? Mod of c bar is actually going to be ये 8 का स्क्वायर जो कि 64 बन रहा है यहाँ पे, प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 16 का स्क्वायर जो कि 256, and that is multiplied with mod of d bar, which is going to be root of 1 only, which is going to be 1 here. So that if we just simplify this further, then we can get this as 0 into 8 is 0, minus 2 into 1 is minus 2 only, and here root of 64 plus 4 is 68 and plus 256. तो देखो 256 plus 64 कितना बनता है? 256 plus 4 becomes 260 plus 60 becomes 320, and here 4 is 324, right? So here it is going to be 324, and then we can just get this as minus 2 by 324. Root of 324, what is it? It is 18, right? So if we reduce this by 2, then we can get this as minus of 1 by 9 here. So we can just get that angle, cosine of angle made by the vector a bar plus b bar with y-axis is actually, okay, cos theta हमको निकालना है ना, तो it will be actually minus 1 by 9 only. Again, there may be some mistake. Let us check. Dot product is going to be 0. ओके, एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा मिस्टेक है कि देखो ए बार जो दिया हुआ है, ए बार इज गिवन टू बी 3i बार minus j bar plus 7k bar, okay, and b bar is given here to be 5i bar plus plus j bar plus 9k bar, okay. तो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे, तो इसकी वजह से अगर हमने a बार प्लस b बार किया तो क्या आएगा देखो, तो a बार प्लस b बार will actually be equal to 8i bar plus 0j bar, right, and plus 16k bar as it is. So that now a bar plus b bar जो वेक्टर है, तो वो वेक्टर ऑलरेडी एक्स जेड प्लेन में है। कैसे हमको पता चला कि वो एक्स जेड प्लेन में है? क्योंकि उसके अंदर सिर्फ आई बार और के बार के कंपोनेंट्स है, जे बार का कोएफिशिएंट यहाँ पे 0 है और इसलिए वो एक्स जेड प्लेन में है। तो y एक्सिस जो है, अभी सपोज ये x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस अगर हमने ऐसे ड्रॉ किया, ये सपोज x एक्सिस है, ये सपोज y एक्सिस है और ये z एक्सिस है, ठीक है। तो अभी देखो कोई भी वेक्टर जो xz प्लेन में होगा तो वो y एक्सिस को तो परपेंडिकुलर ही रहेगा कि नहीं? जरूर, इसलिए वो y एक्सिस को परपेंडिकुलर है क्योंकि वो xz प्लेन में है, और xz प्लेन में होने का रीजन क्या है?
उसका j का कोएफिशिएंट 0 है, तो j का कोएफिशिएंट 0 होने से वो xz प्लेन में बनता है, और xz प्लेन के अंदर होने की वजह से वो y एक्सिस को ऑलरेडी परपेंडिकुलर बनता है। तो इस तरह से वो y एक्सिस को परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर होने की वजह से cos theta, cos 90 will be actually 0, and that's why we can get this as 0 here. और इवन अगर हमारा जो अभी का फॉर्मूला था वो भी अगर हम यूज करते हैं तो cos थीटा इज इक्वल टू, जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पे दिस a बार प्लस b बार को हमने c बार बोल दिया था, और d बार मतलब ही क्या है, यहाँ पे j बार है। तो अगर हमने यहाँ पे लिया तो c बार डॉट d बार अपॉन मॉड ऑफ c बार, सॉरी c बार डॉट d बार अपॉन मॉड ऑफ c बार इंटू मॉड ऑफ d बार। ये अगर वर्कआउट करेंगे तो c बार डॉट d बार करेंगे तो क्या होगा, देखो d बार के अंदर 0 i बार प्लस 1 j बार प्लस 0 k बार। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 8 को 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस 0 को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फिर 16 को 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आखिर सभी 0 हो जाएगा ना। तो इसलिए यहाँ पे न्यूमरेटर में पूरा 0 आएगा, और डिनोमिनेटर में जो भी आए तो भी उसका cos थीटा का जो वैल्यू है, तो cos थीटा का वैल्यू तो ऑलरेडी 0 ही आने वाला है, डिनोमिनेटर में क्या भी आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दैट cos थीटा, cos ऑफ दिस एंगल इज एक्चुअली गोइंग टू बी 0। यस, चलो ठीक है। So here we have done the all the numeric MCQs from the first part of this chapter. Okay, we have completed with the first part in this chapter. The two parts are more remaining in this chapter. तो ये चैप्टर के अंदर और दो पार्ट्स बाकी है, जो कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, ये दोनों पार्ट्स हमको नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स के अंदर देखने हैं, तो उसके ऊपर के MCQs भी करने हैं। ठीक है, सो फॉर टुडे वी विल जस्ट स्टॉप दिस लेक्चर हियर। थैंक यू all of you, bye bye।